Hello everyone. I would like to invite you for just a minute of your day today to disappear into one of the most wonderful books in the world. My favourite book, no matter what pretentious answer I give you. It is Harry Potter and हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी डॉल की है जिसके बारे में शायद कभी ही आपने सुना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका होस्ट राज। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, सितंबर 2014 में हैरिस को ब्रिटेन के शेफील्ड के एक घर में आत्मा के लगाव के एक संदिग्ध मामले की जांच के लिए बुलाया गया था, जिसमें मानसिक माध्यम हेज़ल मैर्स ने उनका साथ दिया था। घर के मालिक ने हैरिस को बताया कि काफ़ी समय से उनके सर में दर्द है और हमेशा उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई भटक रहा है, जिससे वह डरे हुए रहने लगे थे। दोस्तों, जब घर की जांच की गई तो हैरिस की टीम को महसूस होने लगा कि इस घर में किसी काली आत्मा का साया है। इतना सब महसूस करने के बाद हैरिस की टीम ने जब घर के पीछे की जांच की तो हेज़ल ने देखा कि घर की दीवार में से एक ईंट निकल रही थी। दोस्तों, ईंट को निकालने पर हेज़ल को एक डॉल मिलती है। डॉल को देखते ही हेज़ल को चक्कर आ गया, जिससे वे नीचे बैठ गए। दोस्तों, यह देखकर हैरिस उस डॉल पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, जिसमें वे इस डॉल के आसपास नाइट विज़न कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं और उनकी जांच के लिए क्रिस क्रॉकर के पास भेज देते हैं। दोस्तों, फ़ोटो की जांच करते वक्त क्रिस क्रॉकर इस डॉल पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही वे इस डॉल में रह रही स्पिरिट से संपर्क कर लेते हैं, जिसमें वे इस डॉल से कुछ सवाल पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? और यह डॉल अपना नाम पैगी बताती है। फिर वे इस डॉल से उसकी उम्र पूछते हैं, जिसमें यह डॉल अपनी उम्र 19 साल बताती है। फिर वे इस डॉल से इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, जिसमें यह डॉल 1946 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है। फिर वे इस डॉल से पूछते हैं कि वो कहाँ पैदा हुई थी, जिसमें यह डॉल हॉलैंड पार्क बताती है। फिर वे इस डॉल से इसकी मौत का कारण पूछते हैं, जिसमें यह डॉल अस्थमा अटैक बताती है। फिर वे इस डॉल से पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? यह डॉल उन्हें मना कर देती है। फिर वे इस डॉल से पूछते हैं, क्या तुम गुस्सा हो? यह डॉल उन्हें हाँ का जवाब देती है। अब धीरे धीरे पैगी डॉल की फ़ोटोज़ फेसबुक पर वायरल हो रही थी, जब तकरीबन 18 लोगों ने बताया कि जब से इस डॉल की फ़ोटो देखी है तब से उनके सीने में दर्द है। यह सब घटनाएं ऐसी हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। दोस्तों, जांच करते वक्त कई बार पैगी डॉल की मूवमेंट भी रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें यह कभी तो अपनी गर्दन हिलाती और कभी कभी बैठे बैठे घूम जाती। दोस्तों, यह सब घटनाएं बहुत डराने वाली थी। एक बार इस डॉल को एक गार्डन में बिठाकर वीडियो बनाई जा रही थी, जिसमें आप 8 सेकंड के लिए इस डॉल की वॉइस सुन सकते हैं। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो फिर से कुछ लोगों के मैसेज आने लगे कि जब से इस डॉल को देखा है तब से उनके सीने में दर्द है। और आज भी इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दोस्तों, इस डॉल के प्रति आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस डॉल के बारे में पहली बार सुना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक के साथ शेयर कर दीजिए।
आपके लाइक से हमें खुशी मिलती है। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। Haunted dolls. Is it cursed? Is it possessed? Why does it call your name at night? Grab a blanket, turn off your lights, and get ready for 3 of these stories. Demon Doll. Just about a year ago, I had a glass doll. She had blonde curly hair, light brown eyes, and she wore this white dress. Usually during the night, she would look really creepy. I don't know how to explain it, but she just had this unusual look to her. I just ignored it, and didn't really care about it. But after I came back from a vacation to Texas, she was even more creepy looking. And there was a weird, unusual presence near the cabinet. I also began to hear noises, and sometimes I heard my name being called at night. It creeped me out a little, but I still just ignored it. The doll was in a tiny little white glass cabinet I had in my room. She always had this small, shy smile. A couple of weeks went by, and I had to move, so I had a lot of packing to do. One night, when I was in my bedroom packing stuff up, I had my door locked and closed. I was facing behind the cabinet, and I just started feeling a weird presence there. I turned, and the doll was smiling, like a big smile, bigger than her usual one, and her eyes were pitch black. I stood and walked out of my room. I stayed out of my room for the rest of the night. The next morning, I packed her up, and she's still in the box today, up top in my closet. I have nightmares about her sometimes, but I just ignore them and don't think much of them. I don't know if I'm just seeing things that night, but it creeped me out, and I never want to unpack her again. What do you think of it? What should I do with the doll? Sell it, or keep it in a box or something else? The Blonde Doll. So I've had many experiences, but I've never actually seen a ghost. I do believe in them though, but I'm also afraid that one day I may see one. This experience of mine happened when I was 5 years old, and my sister was 9 years old, and we were living in our previous house. I may have been young, but I remember this experience. One day, my parents went to a garage sale and bought 2 porcelain dolls. One blonde one, in a green dress, and a brunette one in a pink dress. My parents bought these dolls for me and my sister. I owned the brunette, and my sister owned the blonde doll. I love my doll so much, I put it away so it wouldn't get damaged. My doll was perfectly harmless. But the other doll was not innocent at all. My sister put her doll on display in her room. When it was time for us to go to bed, my sister turned her lights off and went to sleep. I was also asleep until I woke up in the middle of the night to her yelling out for my mother. My mother rushed into her room and asked what's wrong. I could hear what she said, considering my room was right next to hers. She said, "There was a man in my room saying mean things." My sister was terrified at what happened. To this day, she had not told us what it said. My mom comforted her and told her to tell it to go away if it comes back. These creepy experiences of hers didn't stop there. After this night, my sister moved the doll into another room because of her experience the night before. It was another night, and therefore we had to go to bed once again. I woke once again to my sister yelling out for my mother. My mother came rushing into her room
and so did I. We asked what was wrong. She said, "The creepy man came back." My mother comforted my sister. My sister then noticed the doll had returned to her room and was lying on the floor. So being the supernatural TV show trash that we were, my mother put salt in my sister's room, which was probably a bad idea. In the daytime, we packed the doll away and never touched it for a month after that. Until 1 month later, my brother said he saw a little girl in his room that night and asked if it was one of us. But it wasn't. My brother was cleaning his room when he found the doll under his bed. We all freaked out because of my sister's experience with the doll. Again, being the supernatural trash that we were, we burnt the doll. 1 month later, we found her foot in our cabinet drawer, which was super freaky because we burnt it. We threw the foot in the trash hoping that that would be the last of it. A year after we moved into our current house, we had been in the house for 2 years, when one day suddenly we were sorting out our junk, when we found the shoe and a lock of blonde hair from that same doll. Again, we burnt it. We haven't found any more from the doll since. No, this wasn't fiction. This was just creepy. I have more experiences, and we'll share them soon. The Porcelain Doll. This story takes place in Cincinnati, Ohio, in the same house as my last story. If you read that story, then you know the story that was across the street from mine had a lot of strange activity. First with the father, he hung himself, and then maybe 25 to 30 years later, the son murdered his own mother with a hammer and then dumps her body in the backyard well, where the body stayed for nearly a year before it was found. So I was 15 years old at the time that the murder happened across the street from us. So as months passed, the house was boarded up and condemned. There was something very spooky looking about this house, and when my friends and I would walk by it at night, we would all stop and stare at the windows, because we could swear we can see lights in the top window. Almost like dim candlelight. So one summer night, my friends and I decided we were going to see if we could sneak into this house. There was maybe 4 of us, I think, so we go into the backyard and see cellar doors. We argued a minute about who was going in first. Then we opened the doors and walked in the pitch black house. It smelled horrible, like something rotten. We walked upstairs but could hardly see anything. I saw a porcelain doll lying on the ground and grabbed it. This place just didn't feel right. I felt as if someone knew we were there. Then all of a sudden, my friend starts screaming and runs to get out of the house. So then we all panicked and ran out screaming. She told us she thought she heard a woman moaning and felt something grab her. As we were leaving, I stopped and pulled a small chip of wood off the house, and we went back to my house. We all went down to my garage and tried to perform a seance with the items I collected from the house. I know that was stupid, but we were dumb kids trying to have fun. We tried to make contact with the spirits that lived in that house. I don't remember if anything out of the ordinary happened that night. We might not have really paid enough attention. Before we left the garage,
I hid the doll and wood chip in a corner of the garage and covered it up so my grandmother would not find it. So a few days passed, and my sister and I decided to go check out the doll. We went down into the garage and saw that all my late grandfather's toolboxes and tackle boxes had been moved and were all wide open. And the doll was sitting in the middle of the floor. That was not where I had put her. Me and my sister grabbed each other and said, "Oh my God." I then kicked the doll and it flew towards the back of the garage. I closed all my grandpa's toolboxes and we darted out of there. It took us about a week or so to get enough courage to go back down there again and check it out. We opened the garage door and saw the exact same thing. The toolboxes were all open again and the doll in the middle of the room. This time I found an old box and put the doll in it and shoved it underneath a shelf case. My mom, sister, and I ended up moving out of my grandmother's house shortly after this incident. So about 10 years later, my grandmother passed on, and my mom comes to my house with a box and says, "I got this from your grandma's house. Do you want it?" I opened it, and it was that freaky porcelain doll. I said, "Heck no, please get that thing out of my house." I couldn't believe it. But I think about that doll and just wonder what it was doing, or what had possessed it, or manipulated it to move like that. I don't know. What do you all think? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी एक श्रापित गुड़िया रॉबर्ट की है। मैं हूं आपका होस्ट राज। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सन 1800 में थॉमस और उसका परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने चला आता है, जो कि फ्लोरिडा में था। उन दिनों थॉमस अपनी पत्नी और बेटे रॉबर्ट के साथ रहते थे, लेकिन अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त होने की वजह से उनका बेटा रॉबर्ट अकेला हो जाता था। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में थॉमस एक नौकरानी को रख लेते हैं, जो रॉबर्ट का ध्यान रखा करती थी, और धीरे धीरे रॉबर्ट और उस नौकरानी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक बार जब थॉमस अपने दफ्तर को जा रहे थे, तो वह देखते हैं उनकी नौकरानी घर के पीछे काला जादू कर रही थी, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस नौकरानी को धक्के देकर निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते वो नौकरानी रॉबर्ट को एक गुड़िया देके जाती है, और रॉबर्ट उस गुड़िया का नाम अपने ही नाम पर रख देता है। अब रॉबर्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस गुड़िया के साथ बिताने लगा था, और कभी रॉबर्ट उस गुड़िया से बातें करता और कभी अपने कपड़े पहनाता। यह देखकर थॉमस और उनकी पत्नी रॉबर्ट का गुड़िया के प्रति प्यार देखकर खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। एक बार रॉबर्ट की माँ घर साफ कर रही थी, तो उन्हें रॉबर्ट के कमरे में से रॉबर्ट के साथ किसी की बात करने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब वे रॉबर्ट से पूछती हैं, तो वह यह बोलता है कि ये गुड़िया मुझसे बातें करती है और मेरा नाम बदलने को बोलती है। अब धीरे धीरे घर का सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ मिलने लगा था, लेकिन जब वे रॉबर्ट से पूछते तो रॉबर्ट बोलता यह उस गुड़िया ने किया है। लेकिन समय के साथ साथ रॉबर्ट की माँ महसूस करने लगी थी कि रातों में उनके पूरे घर में कोई घूमता है, और अब उनका शक गुड़िया की तरफ जाने लगा था, क्योंकि जब वे उस गुड़िया को किसी अलग कमरे में रखती तो वह गुड़िया अपनी जगह बदल के दूसरे कमरे में आ जाती। यह सब घटनाएं होने के बावजूद भी रॉबर्ट उस गुड़िया के साथ खेलता
और बातें करता। लेकिन रॉबर्ट के माता पिता भी उसका बचपना समझकर यह सोचते थे जब रॉबर्ट बड़ा हो जाएगा तो उस गुड़िया को छोड़ देगा। लेकिन बड़े होने के बाद भी रॉबर्ट उस गुड़िया से बातें करता और अपने बचपन के कपड़े पहनाता। यहाँ तक कि रॉबर्ट अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ सोता नहीं था। यहाँ तक कि 30 साल का होने के बाद भी रॉबर्ट पूरे दिन भर उसी गुड़िया से बातें करता और खेलता। इन सब बातों से रॉबर्ट की माँ बहुत परेशान हो चुकी थी और एक दिन रॉबर्ट से बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यह गुड़िया फेंक देगी। और यह सुनकर रॉबर्ट बोलता है ऐसा नहीं करना, अगर यह गुड़िया इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर में कोई नहीं बच पाएगा। कुछ समय बाद रॉबर्ट की माँ चल बसी और कुछ सालों बाद रॉबर्ट की भी मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद मॉर्टल नाम की महिला रॉबर्ट के घर को खरीद लेती है और घर की साफ सफाई करते वक्त उसे रॉबर्ट की वही गुड़िया मिलती है जो कि रॉबर्ट और उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार थी। मॉर्टल को शुरू से ही लगता था कि यह गुड़िया श्रापित है और बहुत डरावनी है। अब वह भी इस गुड़िया की आवाज़ें सुनने लगी थी और महसूस करने लगी थी कि यह गुड़िया रातों में सारे घर में घूमती है। इन सब घटनाओं से तंग आकर वह गुड़िया को एक म्यूजियम को दान में दे देती है और कुछ समय बाद मॉर्टल की भी मौत हो जाती है। और आज के समय यह गुड़िया रॉबर्ट द डॉल के नाम से मशहूर है और आज भी उस म्यूजियम में मौजूद है। लोगों का कहना है इस गुड़िया का फोटो लेते वक्त उनके कैमरे में खराबी आ जाती है या इस गुड़िया की फ़ोटो लेते वक्त एक परछाई कैद हो जाती है, जिससे कुछ लोग इस गुड़िया को सॉरी लेटर भी लिखते हैं। साल 2012 में एक आदमी ने रॉबर्ट द डॉल के सामने जाकर बोला था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम में दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। और इस घटना के कुछ समय बाद उस आदमी की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, रॉबर्ट द डॉल आज भी श्रापित मानी जाती है और ये भी कहा जाता है बिना इससे पूछे इस गुड़िया की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये गुड़िया नाराज़ हो जाती है। People to join. Hope everyone's having a good evening. I will just chat a bit of nonsense while we wait for people to join. But yeah, I'll explain what we're doing here. So